respected comrade, General Secretary of CPIML, Sri Dipankar Ji, respected all dignitaries in the dais, and beloved all comrades gathered here. My warm greetings and lal salam to you all. I would like to express my gratitude for giving me the opportunity to participate in this historic conference. Alongside Dr. Ambedkar and Periyar, our party VCK, Liberation Panthers Party, is following the revolutionary philosopher Karl Marx as a mentor, and we working together with left parties beyond electoral politics. Due to this, the left parties in Tamil Nadu have recognized the VCK as a left party. Since my student days, I have been influenced by communist ideology, even though I was inspired by Dr. B.R. Ambedkar and Tandai Periyar. I founded this party by combining the ideas of Dr. Ambedkar and Periyar with Marxist ideas. Initially, we worked as a social movement for 10 years without involving ourselves in electoral politics. It was in 1999 that we have decided to participate in electoral politics. Today, the VCK is a party with 2 members of parliament in Lok Sabha, 4 MLAs, and more than 100 local body representatives. The VCK has branches not only in Tamil Nadu but also in Puducherry, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, and Maharashtra. In the states of Andhra Pradesh and Telangana, the VCK party is also working with the left parties, including CPIML. The resolution adopted in this conference correctly recognizes fascism as the main threat to people and democracy in the current juncture. On behalf of VCK, we wholeheartedly welcome and support the resolution. We have a great duty to unite all democratic forces against fascists, isolate all Sanatana forces. So your resolution correctly identifies this. As Comrade Dimitrov stated in 1935, no general characterization of fascism, however correct in itself, can relieve us of the need to study and take into account the special features of the development of fascism and various forms of fascist dictatorship in the individual countries and its various stages. It is necessary in each country to investigate, study, and ascertain the national peculiarities, the specific national feature of fascism, and to make out effective methods and forms of struggle against fascism. This is Dimitrov statement. VCK considers Sanatana as the present form of fascism in India. We have to specifically mention the fascism is nothing but Sanatana. Communal means mentioning all religious fanatics, but we have to specific Sanatana forces, San Parivar forces.
VCK considers Sanatana as the present form of fascism in India, which destroys democracy and promotes mobocracy. Mobocracy. It uses majoritarianism to bring the masses under its control. Sanatana legitimizes discrimination. It is based on hatred. It excludes the majority of people from education and economic resources. The caste system by Sanatana makes the people willingly accept slavery. The theory of Superman is an inherent aspect of Sanatana. It was because of these similarities that the RSS admired German Nazi policy. Hitler was cited as a role model. RSS ideologues were insisted that many of Hitler's practices be implemented in India. The basic structure of Modi regime is majoritarianism and crony capitalism. Majoritarianism and crony capitalism. Their goal is not India's development, but to remove parliamentary democracy in India and turn it into Hindu Rashtra. This is the plan of the BJP government. On the one hand, they foster majoritarianism by turning religious sentiment into fanaticism and using violence, including mob lynching, to create a civilian army. On the other hand, they keep the masses in their grip by depriving them of economic self-reliance, taking away public resources and placing them in the hands of corporates. The Modi government has been doing this for the past 9 years, and Indian democracy is deteriorating under the wheels of BJP's double-engine train of majoritarianism and crony capitalism. What we fear is now happening. The RBI, CBI, ED, ECI, and judiciary, all kinds of autonomous institutions have now become tools of Modi regime. The current communal atmosphere in India is very dangerous. Sectarian forces are working to undermine Indian democracy. Spontaneous protests against this have arisen here and there, and left parties have the responsibility to lead it politically. Spontaneous protests have arisen here and there, and left parties have the responsibility to lead it politically. We must work diligently to consolidate secular forces across the country. We have the responsibility to oppose bigotry uncompromisingly. The wave of Sanatana fascism is hitting Indian democracy like a tsunami. Having successfully tested in Gujarat, it can convert a majority government. Majoritarianism, majorities have differences. It can convert a majority government into a majoritarian government. This is majoritarian government without changing the constitution. That is very important. Without changing the constitution, they are diluting the spirit of constitution. In this context, the right united front strategy would be to bring all anti-fascist forces without ignoring even the parties that give lip service to secularism. Propaganda plays an important role in creating an authoritarian state. Fascists rely heavily on propaganda to establish their ideological dominance in society and government institutions. Nikos Polanska, a Marxist philosopher who has conducted extensive research on fascism, identifies three main features of authoritarian state:
party, the family, and the apparatus of propaganda. Under the fascist government, autonomous institution will come under the control of the ruling party, and the institution of the family is used to create voluntary servitude. Paulansa argues that the government will gradually reduce the importance of education and the communication media, such as newspaper, radio, and television, will be stripped of their independence and turned into mere propaganda tools. Upon examining the changes that have taken place in India since Prime Minister Modi took office, we can see how the ideas presented by Paulansa are being implemented. Following the Gujarat riots in 2002, the Editors Guild of India dispatched 3 senior journalists, including Akhtar Patel, Dilip Patkonka, and B.G. Varghese, to investigate, to report firsthand. During their investigation, they met various people, including Mr. Modi, who was then the Chief Minister of Gujarat, and they documented the role played by Gujarati media in promoting the riots. Specifically, they found that the Gujarat Samachar and Sandesh newspapers incited hatred and instigated violence, whereas the English media refrained from such as hate propaganda. However, the English media landscape has since changed due to the proliferation of digital media and the economic damage caused by the COVID pandemic. They completely lost their independence now. The surrender of the English media, the TRP thirst of television channels, and the compromise of regional language media have created an environment conducive to fake news and hate propaganda. This has made it easy for the Modi government to thrive by spreading the hate. During the Gulf War, the US government sent journalists alongside the military to justify the war, and it was called embedded journalism. Similarly, the Indian media that advocates for the authoritarian regime is called Godi media. The credibility of the media has been destroyed in this age of Godi media, but the BBC remains one of the few media outlets that has maintained its credibility in this environment. The 2 parts of democracy released by BBC has thoroughly exposed the role of Mr. Modi in Gujarat riots. It also explained how the hate against Muslims become a major tool of Modi government in whipping up religious passion and polarizing the society. This is why Modi government has conducted a survey in the offices of BBC. On behalf of BCK, we have translated the documentary into Tamil and screened it for a public Chennai. Even before Prime Minister Modi could recover from the shock caused by the BBC documentary, the Hindenburg report exposed a massive scandal. The report revealed the malpractices of Gautam Adani, the corporate arm of Prime Minister Modi, and how the Adani Group created 7 shell companies in Mauritius to artificially inflate their share prices, and obtain loans at inflated value. They then used various agreements based on those loans with the government of India and with the governments of many other countries, with the direct help of Prime Minister Modi using government power. The Hindenburg report revealed how Adani became second richest person in the world in a short period of time with the support of Modi government. After the release of Hindenburg report, Adani's shares began to fall, and the BJP attempted to save him using their fake news industry. However, their efforts failed, and the Modi government, which controls the most of Indian media through bribes and threats, has not been able to silence foreign media like Wall Street Journal. Every day,
Information about Adani's malpractices continues to come to light, and the Wall Street Journal has now exposed the link between the Adani Group and two bogus companies based in Mauritius. The frauds committed by the Adani-Modi alliance have only just begun to be exposed as the biggest corruption of our time. Opposition parties, including the Congress, made a reasonable demand in Parliament for a debate to be held and a joint parliamentary committee to be formed to investigate this malpractice. However, the Modi government is now attempting to use the judiciary to save face. Comrades, this fascist regime must not be allowed to continue to power in 2024. If they do, no one will be able to save India. Therefore, let us build a broad alliance to defeat the Sanatana fascism and protect Indian democracy. The CPIML National Convention is a beginning of this campaign across the country. We, the VCK parties, ready to join with you all to defeat Sanatana fascist forces. We declared a few months ago that we have to isolate Sanatana forces all over the country, BJP and RSS. We have to consolidate all democratic forces all over the country. This is a challenge in front of us. So our party, VCK, it means Liberation Panthers Party, we are ready to join with you all to work to defeat Sanatana forces. Otherwise, they will dilute our constitution. Your slogans are very specific. We have to save the country. We have to save the constitution. We have to save the secularism. This is our first challenge to face in our time. This is high time to unite all democratic forces. We, the party VCK, is ready to join with you all. Thank you for this opportunity once again. Thank you. So now translation. कॉमरेड ने अभी जो कुछ कहा उसको मैं बहुत संक्षेप में हिंदी में रख दे रहा हूं आपके सामने। मुझे इस ऐतिहासिक सम्मेलन में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। हम अंबेडकर, पेरियार के साथ साथ कार्ल मार्क्स को अपना वैचारिक संरक्षक मानते हैं, इसीलिए तमिलनाडु में VCK को एक वाम दल के रूप में मान्यता मिली। मैं छात्र जीवन से ही साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित रहा हूं। मैंने अंबेडकर और पेरियार के विचारों को मार्क्सवादी विचारों से जोड़कर एक पार्टी की स्थापना की थी। शुरुआत में हम बिना चुनावी राजनीति में शामिल हुए एक सामाजिक आंदोलन के बतौर काम कर रहे थे। 1999 में हमने चुनावी राजनीति में भाग लेने का फैसला किया। आज VCK लोकसभा में 2 सदस्यों, 4 विधायकों और 100 से अधिक स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों वाली पार्टी है। इस सम्मेलन में जो संकल्प लिया गया है वर्तमान समय में फासीवाद के बारे में और जो लोकतंत्र पर खतरे को एक मुख्य खतरे के बतौर पहचाना गया है, हम उससे सहमत हैं। VCK की ओर से हम इस संकल्प का तहे दिल से स्वागत और समर्थन करते हैं। VCK सनातन धर्म को भारत में फासीवाद का वर्तमान रूप मानता है, जो लोकतंत्र को नष्ट करने और भीड़ तंत्र को बढ़ावा देने का काम करता है। ये जनता को प्रभावित करने के लिए, उस पर अपना कब्जा करने के लिए बहुसंख्यकवाद का उपयोग करता है।
सनातन भेदभाव बढ़ाता है और ज्यादातर लोगों को शिक्षा और आर्थिक संसाधनों से बाहर कर देता है। आरएसएस के विचारकों ने जोर देकर के कहा था कि उनको हिटलर की कई सारी योजनाओं और प्रथाओं को अपने देश में लागू करना चाहिए। मोदी शासन की मूल संरचना बहुसंख्यकवाद और क्रोनी पूंजीवाद की है। उसका लक्ष्य भारत का विकास नहीं बल्कि भारत के संवैधानिक लोकतांत्रिक संघीय ढांचे को हटा करके इसे एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देना है। यही भाजपा की योजना है। इसके लिए वे मॉब लिंचिंग और हिंसा का उपयोग करते हैं। वे जनता को बड़े पैमाने पर आर्थिक स्वावलंबन से वंचित करके सार्वजनिक संसाधनों को छीन करके उन्हें कारपोरेट के हाथ में सौंप रहे हैं। भारत के सांप्रदायिक माहौल को वे खराब करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं और लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। इसके खिलाफ स्वतःस्फूर्त ढंग से कुछ आंदोलन इधर उधर जरूर हो रहे हैं, लेकिन आज वामपंथी दलों पर इसको एक राजनीतिक आंदोलन बनाकर उसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है। निरंकुश राज को कायम करने में प्रचार एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फांसीवाद के संस्थापकों ने भी अपना वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रचार पर बहुत भरोसा किया था। फांसीवाद पर व्यापक शोध करने वाले मार्क्सवादी दार्शनिक निकोल पॉलेस्टास अधिनायकवादी राज की 3 मुख्य विशेषताओं की पहचान करते हैं: पार्टी, परिवार और प्रचार तंत्र। अभी प्रधानमंत्री मोदी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के आने से जो झटका लगा था उससे उबर पाते। उसके पहले ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने एक और बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के साठ-गांठ और इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का खुलासा है। इस रिपोर्ट के जारी होने से अडानी के शेयर गिरने लगे। तब भाजपा ने अपनी गोदी मीडिया को इस्तेमाल करके उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब भी वे इसमें कामयाब नहीं हुए। मोदी और अडानी का ये गठबंधन, इसका ये जो धोखाधड़ी जो उजागर हुई है, ये हमारे समय का सबसे बड़े भ्रष्टाचारों में से एक है। लेकिन ये अभी शुरुआत है, अभी और भ्रष्टाचार इनके उजागर हो सकते हैं। साथियों, इस फांसीवादी शासन को 2024 में सत्ता में लौटने की इजाजत नहीं दी जाती। अगर वे 2024 में भी सत्ता में वापस आते हैं तो भारत को कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए आइए हम इस सनातन फांसीवाद को हराने और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक व्यापक गठबंधन बनाएं। धन्यवाद। वणक्कम। ये राष्ट्रीय कन्वेंशन वो अपने समापन की ओर है और वो अपने मकसद में कामयाब रहा है। यहाँ पर देश के समाजवादी, वामपंथी, कांग्रेस और अन्य दलों के नेता आए। तमिलनाडु से तिरुमावलवन जी आए और हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ नेता और कार्यकर्ता, जिन्होंने फासिज्म के खिलाफ, जो दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि गांव की गलियों से लेकर के और संसद तक में लड़ाई चल रही है, इसको लड़ने वाले प्रतिनिधि मौजूद हैं। हम सब का, सलमान खुर्शीद साहब का, सलीम खान साहब का, बिहार के चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी का, उप मुख्यमंत्री राजद के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी का,
तिरुमावल्लवन जी का और उन सभी का, हेमंत सोरेन का जिन्होंने संदेश भेजा, ललन सिंह जी आगे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने इस राष्ट्रीय कन्वेंशन को संबोधित किया, उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। इस राष्ट्रीय कन्वेंशन ने आज एक महान किसान नेता का जन्मदिन भी है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का, जिनकी कर्मभूमि बिहार रही है, पटना रहा है, बिहार रहा है। और उस दौर के किसान आंदोलन ने आजादी की लड़ाई में किसानों के एजेंडे को मजबूती से रखा, जमींदारी उन्मूलन का रास्ता प्रशस्त किया, भूमि सुधार का रास्ता प्रशस्त किया। तो हम उन्हें नमन भी करते हैं। और बिल्कुल आज जो यहाँ राष्ट्रीय कन्वेंशन में एकता दिखी, आजादी के लड़ाई की तरह की एकता दिखाई दी। जैसे उस लड़ाई में भी कांग्रेस के नेता खुद गांधी जी के नेतृत्व में पूरी लड़ाई चल रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी और भी कई बड़े बड़े नेता और वामपंथ के बड़े बड़े नेताओं, समाजवादी आंदोलन के बहुत सारे नेताओं मिल करके जिस तरह से कंपनी राज का, ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया था, आज जब फिर से कंपनी राज का खतरा है, कॉरपोरेट टेक ओवर ऑफ एवरीथिंग का खतरा है, कॉरपोरेट टेक ओवर ऑफ एग्रीकल्चर, माइनिंग, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जो भी संसाधन है उनके ग्रैब कर लेने का जब खतरा है, फासिज्म का खतरा है, संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर देने की जब एक साजिश चल रही है तेजी के साथ, हमारे देश के विभिन्न दलों के नेताओं ने इस राष्ट्रीय कन्वेंशन से एकजुटता का संदेश दिया और साथ ही साथ भाकपा माले पर यह भरोसा भी जताया कि लोकतंत्र के लिए मजबूती से लड़ने वाली, कुर्बानी देने वाली ताकतें यहाँ बैठी हुई। भाकपा माले ने अपने लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली से जो 15 तारीख को हुआ, देश को एक नया आत्मविश्वास दिया है। और जो 2 दिन से विदेशी मेहमानों, देश के प्रतिष्ठित लेखकों, पत्रकारों, देश के बड़े वामपंथी नेताओं और यहाँ आज कांग्रेस के, समाजवादी धारा के बड़े नेताओं, बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उन सब की उपस्थिति में, झारखंड के मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के, मुख्यमंत्री झारखंड के, जिनका संदेश हमें आया, तो इन सब से जो एक संदेश निकला है, उसने हिंदुस्तान को एक दिशा। सलमान साहब ने भी कहा कि हम भी तैयार हैं, नीतीश जी ने कहा कि हम भी तैयार हैं, हम लोग इस बड़ी एकता के निर्माण के लिए पहल करेंगे। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय कन्वेंशन इस दिशा में एक सार्थक कदम होगा और विभिन्न धाराओं को उसने यहाँ उपस्थित किया है। भाकपा माले के साथियों ने उसमें पूरा समर्थन दिया है और यह भी इस कन्वेंशन से संकल्प निकल रहा है कि आपने जो ये संदेश दिया है उसको हिंदुस्तान के कोने कोने में हम ले जाएं। 27 राज्यों के प्रतिनिधि हैं यहाँ, 27 राज्यों, जो आपने बातें रखी हैं, कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक की और त्रिपुरा से लेकर के पंजाब तक की जो एकता यहाँ रही है, तो आपका संदेश कोने कोने में जाएगा। भाकपा माले देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में अपनी दृढ़ता का प्रदर्शन भी करेगी और इस एकता के निर्माण में भी हमें कोई लालच नहीं है। हम निस्वार्थ भाव से, हमारे महासचिव ने कहा
जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके यहाँ चेहरा कौन है प्रधानमंत्री का, तो उन्होंने कहा कि सवाल इसका नहीं है, सवाल ये है कि एक सिंगल पार्टी तानाशाही को थोपने की कोशिश की जा रही है। तो उधर सिंगल पार्टी रूल की जगह पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का सवाल, और यहाँ पर बहुत सारे चेहरे हैं। मुख्य सवाल यह है कि यह जो फासिज्म चल रहा है, यह जो कम्युनलिज्म चल रहा है, यह जो संविधान को बदल देने की कोशिश चल रही है, इसको हम इस देश में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, और इसके लिए हम इस एकता के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयारी हैं, और इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरी शिद्दत से हम कोशिश करते रहेंगे। ये हमारी बात है। तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय कन्वेंशन काफी सफल रहा है, और उन तमाम नेताओं को जिन्होंने इसमें शिरकत किया, और जिन्होंने पहले भी यहाँ कई वामपंथी नेता आए, सलीम आए, सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर, सीपीआई के राष्ट्रीय नेता आए, अन्य तमाम वामपंथी पार्टियों के नेता आए यहाँ पर, और उन्होंने भी एक दृढ़ता जाहिर की कि वामपंथ इस पूरी एकता को बनाने में, उसको ताकत देने में अपनी पूरी ताकत झोंकेगा, और देश में लोकतंत्र की रक्षा करेगा, देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी रक्षा करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कन्वेंशन काफी सफल रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देश में जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबों के अधिकार छीने जा रहे हैं, जल जंगल जमीन से आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, गरीबों को उनके घरों से बुलडोजर चला करके बेदखल किया जा रहा है, यह सब कुछ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। देश आम जनता का, हर आम जनता के अधिकारों की रक्षा हर कीमत पर हम करेंगे। ये सम्मेलन इसका संकल्प व्यक्त करता है। तो मैं इसी के साथ अंतिम में अभी सांस्कृतिक कुछ कार्यक्रम होंगे, उसके बाद 1:15 बजे इस सत्र की समाप्ति की घोषणा की जाए।